Good morning, class 6 students. I am Arvind sir on behalf of SB Public School. I am going to explain now today exercise 5C, the last two questions which are left out for explanation of lesson number 5, natural number and whole numbers. So this exercise 5C, all the questions which I have previously solved from 1 to 6 and explained also, and these last two questions which are left out, they are based on the properties of addition of whole numbers. Okay, so properties of addition, properties of multiplication of whole numbers. Sorry. So now, based on those properties of multiplication of whole numbers, these last two questions are there which I am going to solve now. Okay, now see here. So first question is 7. First question you see 437 plus 3 multiply in bracket 400 minus 3 is equal to 397 multiply dash. It is a fill in the blanks. What number will come here? You have to fill up. So what number will come here? How will you come to know? Let us solve this one. Then after solving this one, we will come to know what number we have to fill up here. So in your copy, write this one first of all. Okay. Now let us solve this one and let's see what is coming. So here you see how will you solve. यहाँ पे ब्रैकेट भी है, दो ब्रैकेट प्लस भी है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई. So which work you will do first? Again you have to take the BODMAS rule. The BODMAS rule में B for bracket. That means bracket work you have to do first. This two bracket work you have to do first. Now other will remain as it is. So in this bracket क्या करना है? 437 के साथ 3 को ऐड करना है. तो ब्रैकेट के रख दो ऐसे. ऐड करो 7 plus 3. 440 will come. If you add this two number by writing one below the other, if you cannot add in mind में अगर ऐड नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे लिखो 437 ऊपर लिख दिया प्लस 3 नीचे 7 plus 3 10 1 3 1 plus 4. यहाँ पे आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है. 3 plus 1 4 4 plus 0 4 4 plus 0 4. So 440 came here. Multiply will remain multiply as it is. Now 400 minus 3, how much it is coming? If you cannot subtract in mind, write this 2 one below the other on the right hand side of your answer sheet and solve. And what answer is coming after subtracting, write that number here. So 400 minus 3. Okay, you can put 0 before 3, 1 0 before this 0, another 0 you can put. Now carry over subtraction it is. So 0 is smaller than 3, 0 will ask 0 to give 1. 0 will say to this 0, my friend I don't have any 1 because I am 0, I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है, रुको मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ फिर भी. ये क्या बोला? 4 से बोलेगा 1 दे दो, तो 4 में 1 दे देगा मतलब 0 के पास 1 आ गया. 4 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3. ओके, इसने 0 ने 0 से मांगा था 1, यहाँ पे तो 10 हो गया. 10 होने के बाद क्या करेगा? इसको 1 दे देगा, तो 0 के आगे 1 आ गया. 10 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा? ये 9. ओके, नाउ 10 minus 3, 10 पेंसिल है, 3 पेंसिल दे दोगे तो कितना रहेगा? 7 पेंसिल. ओके, 9 पेंसिल है, 0 पेंसिल दिया मतलब कुछ पेंसिल नहीं थे, कितना पेंसिल रहेगा तुम्हारे पास? 9 का 9 रह जाएगा. 3 पेंसिल था, 0 पेंसिल दिया मतलब कुछ नहीं थे, तुम्हारे पास कितना पेंसिल रहेगा? 3. तो कितना आया? By subtracting this 2 we got 397. Okay, now check this one. Now this you have to multiply, don't multiply now. Now check this one. Now you can write this one like this. Now again you do the BODMAS rule. यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले होगा, मल्टीप्लाई जैसा वैसे ही रहेगा. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करना है? to remove the bracket. 440 का कुछ नहीं मतलब प्लस है, ब्रैकेट का कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस प्लस में प्लस. ओके, प्लस we write, no required to write, प्लस प्लस में प्लस, ब्रैकेट हट गया 440. मल्टीप्लाई अगेन बिफोर 397 कुछ नहीं मतलब प्लस है, ब्रैकेट का कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस प्लस में प्लस आता है मतलब लिखने कोई जरूरत नहीं है, प्लस प्लस में प्लस, ब्रैकेट हट गया 397. Now see this one and see this one. Okay, here what is written here? 397. Here it is written after 440. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? 397 पहले लिख दिया into dash. Dash पे क्या होगा? Now it is commutative property of multiplication. If you interchange the order of the number, ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, if you interchange the order, 397 you bring it at the first, 440 you bring it
After 397 you write down, you will change the position of the two numbers. Here also what answer is coming, same answer will come here. This is commutative property. So 440 coming, you write 440. Okay, this will be the answer. Next let us come to this one. So here on we have to apply the property of multiplication of whole numbers. Okay, now here this question. Okay, this plus this is equal to 11 into dash. Here you have to fill up something. Is equal to this. I will come later. After fill up this one, then I will come to know what I will fill up here, and at the last what I will fill up here, I will come to know. First of all, what I will fill up here, that you will do first. Write this one as it is, 66 plus 44 plus 22. Okay, लिख दिया. अब इसको सॉल्व करें. इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं. We can write this one like this. Suppose, yeah. Now 66 we can write 11 multiply 6. Yes or no? 11 को 6 से गुना करोगे इतना आएगा, तो इसके लिए ये लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, प्लस का प्लस. 44 we can write 11 into 4. Okay, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, मतलब ये दोनों बराबर है. इसके लिए ये भी लिख सकता हूं, प्लस 11 मल्टीप्लाई 2. दोनों को मल्टीप्लाई करो 22 आएगा. तो इन प्लेस ऑफ 22 I can write this one. Now you see carefully this one. 11 multiply here also written, 11 multiply here also written, 11 multiply here also written. And this 4 whole numbers are written, 3 whole numbers are written, 6, 4, 2. And also some plus signs are there, 2 plus signs are there. That means 11 multiply has been distributed. 11 multiply को मैंने बांट दिया. वो 3 whole number किसको? 6, 4 और 2, और 6, 4, 2 को मैं ऐड भी कर रहा हूँ. That means this property is what? Distributive property of multiplication over addition of 3 whole numbers, 6, 4 and 2. So you already solved this type of problem. ये 3 बार 11 मल्टीप्लाई 3 बार लिखा हुआ है. ये बढ़ गया, 6 को दे दिया गया 11 मल्टीप्लाई, 4 को भी 11 मल्टीप्लाई दे दिया, 2 को भी 11 मल्टीप्लाई दे दिया. 3 को 3 बार 11 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक बार 11 मल्टीप्लाई एक बार लिख दो. Okay, now so 3 times 11 multiply written. So in this case you have solved so many problems based on this type. So 11 multiply you write one time and put a bracket. Okay, now see this one. 11 multiply written already, 6 not written, write 6 here. Now plus not written, plus write down here. Now see this one. इसमें देखो 11 multiply लिखा हुआ है, 4 को लिखा नहीं था, 4 यहाँ लिख दो. प्लस का प्लस लिखा नहीं है, तो प्लस ये प्लस यहाँ आ जाएगा. 11 मल्टीप्लाई इंटू 2 को देखो, यहाँ 11 मल्टीप्लाई पहले से लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, 2 का 2 लगा दो. So now see this one and see this one. 11 multiply bracket 6 plus 4 plus 2. So 11 multiply bracket is there, that means this will come here, 6 plus 4 plus 2. Okay, now after this, so this fill in the blanks solved. Now here in this fill in the blanks, what you write here. Now see this one now. So now in this one I have written here. Now solve this one. How will you solve? Apply BODMAS rule. Because bracket भी है, multiply भी plus भी है. As per BODMAS, B bracket is coming first. That is bracket पर you have to do first. मतलब bracket के अंदर जो दिया हुआ है, जो काम करना है उसको पहले करो, बाकी जैसे वैसे लिख दो. 11 गुना का गुना लिख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख दिया. अंदर में क्या करना है? तीनों नंबरों को ऐड करना है. तो 6 plus 4 10, 10 plus 2 is 12. So write down 12. Now again apply BODMAS rule. Multiply bracket is also given. That means ये ब्रैकेट और पहले करना पड़ेगा. Other things will remain as it is. 11 मल्टीप्लाई इसे रहेगा. ब्रैकेट में क्या करना है? नंबर लिखा हुआ है. ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ, तो 12 के कुछ नहीं तो प्लस है, ब्रैकेट का कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस लिखते नहीं है, ब्रैकेट हट गया 12. So 11 multiply 12. Here you see 11 multiply dash. So 11 multiply dash. That's what number will come? 12 is there, so write down 12. Now last fill in the blanks. What you have to fill up here? Now 11 multiply 12. So what you are seeing here, 11, you multiply this 11 multiply 12. In the rough you can do 12 multiply 11. Okay. First you multiply 1 with this 12. 1 2s are 2. 1 1s are 1. Put 1 cross, or you can put 1 0. It is your wish. Now 1 2s are 2. 1 1s are 1. Add this 2. 2 3 1. 132 coming. So what is coming? 132 coming. Here also to multiply, what will come? 132. Write down. Okay. Fine. Next is, next evaluate.
evaluate this type of problem. I hope you have done previously when I was explaining question number 3 and 4, 2, 3 and 4. Okay. Now evaluate written here. So after evaluate, nothing written like evaluate using the properties. The previous question which I explained in the previous class, like question number 4 and 5, in that also two number you have to multiply, but written there in the question, evaluate using properties of multiplication of whole numbers. But here only evaluate written. So it is your wish, you can apply the property of multiplication of whole numbers and then get the answer, or directly you can multiply. So nothing written means you can do anything your wish. So now what I am doing, I am not going to apply the properties of multiplication of whole numbers. I will direct multiply I will do. Now remember, this two number I have to multiply. So suppose out of this 3 I am explaining any 2, then you can do the left out problem in the question, because all are same type. Now see one, this and those two I am going to solve. This 2 you have to multiply without any properties, because nothing mentioned that you have to multiply this two number using the properties of multiplication. So without applying properties of multiplication, how will you multiply? Very easy. दो नंबर को मल्टीप्लाई करने बोला गया है, तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई दो नंबर को सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी दो ऊपर नीचे दोनों को लिखना पड़ेगा पहले. तो कोई बच्चा क्या करेगा, 15 मल्टीप्लाई 49372. दिस प्रोसेस इज नॉट रॉन्ग, बट हियर इट विल टेक लॉन्ग टाइम. पहले 2 से मल्टीप्लाई करेगा 15 को, फिर 7 से करेगा, 3 से करेगा, 9 को इससे करेगा, 4 को इससे करेगा, देन ही विल add and get the answer. So always remember, when multiplying in two numbers direct multiplication, always write the big number first. So what I will do, I will, among these two number, which is the big number, ये बड़ा number इसको पहले लिखोगे, 49372 multiply the small number right below. इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ दो ही डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, you will get the answer. So it is quick method. Now multiply 5 with this number, 5 2s are 10, 0 1 carry. 5 7 35, 35 plus 1 36, 6 3 carry. 5 3 15, 15 plus 3 is 18, 8 1 carry. 5 9 45, 45 plus 1 is 46, 6 4 carry. 5 4 is 20, 20 plus 4 is 24. Okay. Now one number, one digit you have to multiply with this number. So before multiplying one with this number, you have to put a 0 below this 0. You can put a 0, or some students put cross. I am putting 0. Okay. Now multiply 1 with 2. 1 2s are 2, 1 7 is 7, 1 3 is 3, 1 9 is 9, 1 4 is 4. Now add this 0. 6 plus 2 8, 8 plus 7 is 15, 5 1 carry. 6 plus 3 is 9, 9 plus 1 is 10, 0 1 carry. 9 plus 4 is 13, 13 plus 1 is 14, 4 1 carry. 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. Okay. In this way, remember, write the big number first, then write the small number, then directly multiply. In this case also, one student will multiply like this. 8 he will write at the top, then below you will write the big number. Then what will happen? यहाँ पर भी आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर आएगा. इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सारे को ऐड करके आंसर आएगा. So better follow this rule. Big number you write at the top, then multiply 8. In this case, only one time you will multiply and get the answer. So 8 times 72, 2, 7. 8 times 72, 72 plus 7 is 79, 9, 7 carry. 8 times 72, 72 plus 7 is 79, 9, 7 carry. 8 times 72, 72 plus 7 is 79. Okay. So this answer you got by multiplying. So this one also you will do how? The same way. The big number 355 को पहले लिखोगे, गुना 18 कर दोगे, फिर you will get the answer. Okay. I hope you have understood. So solve this problem will be given as homework. You solve it at home. So now next is, I think time is short. Okay, one property now. I will go to the exercise 5C problems all explained. Today I finished exercise 5C. So I have to go to the exercise 5D. Next exercise 5D. Before going to 5D, the last property of division of whole numbers, that I will explain. Then after explaining this property, it will be easy for you to solve the problem given on exercise 5D. Okay. Now 5D. Now property of division
of whole numbers. Okay, so many properties are there, just like the property I've explained for multiplication, addition and subtraction of whole numbers. So one by one we'll discuss all the properties. First is closure property. Closure property, जब कोई दो नंबर होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन की प्रॉपर्टी में होगा या नहीं होगा. The condition is that if you take any whole number, suppose x and y, closure property division में तभी होगा अगर suppose if you take any whole number x and y and if you divide x divided by y should be equal, x divided by y always a whole number should come. Okay, कोई भी दो होल नंबर ले लो और x उस होल नंबर दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा होल नंबर में आना चाहिए, तभी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर फॉर द डिवीजन ऑफ होल नंबर्स. सो लेट अस टेक one example, two examples. Suppose x is 4 and y is 2. Now x divided by y, so 4, x के 4 लिख दो क्योंकि x बराबर 4 है, y के जगह 2 लिख दो, y बराबर 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 क्या है, होल नंबर हो गया, नो प्रॉब्लम. Now suppose take another example, x ले लो 2 and y ले लो, तुम क्या है 4. Now x divided by y, 2 divided by 4 क्या आता है, डिवाइड करके देखो, 2 के बाद लास्ट नंबर के बाद एक डॉट आता है, उसके बाद बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं, और 4, 2 को 4 से डिवाइड करना, इन प्लेस ऑफ 2 आई कैन राइट 2 लाइक दिस 4. नाउ 4 0 is 0, ओके, 2 उतारो, ये 0 उतारने से पहले डॉट डालो, 0 उतर गया, 4 5s are 20, ओके, स्टॉप इट डिवीजन. सो 2 divided by 4 what is coming, 0.5. It is not a whole number, it is not a whole number. So कोई भी दो होल नंबर होल नंबर ले लो, डिवाइड करोगे ऑलवेज होल नंबर नहीं आ रहा है. बाय सीइंग दिस टू एग्जांपल, सो व्हाट यू विल से, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एक्जिस्टिंग. सो व्हाट यू विल से, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट existing for division of whole numbers. Okay, or in some books it is written division of whole numbers is not closed. Okay, two things mean same.